Dipole moment. We were talking about dipole moment. First of all, I try to basic portray a concept of polar and non-polar bonds. What are the polar bond? Once again, bonds, covalent bond are bonds. Those are formed between two different atoms or more than different atoms. I mean, when the bond is formed between different atoms, it is said to be the polar bond. And when the covalent bond is formed between two similar to alike atoms, is said to be non-polar bond. That is the simplest definition of polar, non-polar bonds. So the first thing is, the first perception is, whenever there is a polar bond in a molecule, then it is thought that this molecule is a polar molecule. हम सोचते हैं ऐसा. पहली जो बेसिकली जो परसेप्शन डेवलप होती है कि दिस मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग non-polar bond, obviously these overall molecules are non-polar molecules. So these are non-polar molecules. These are having no charge separation on it. These are non-polar molecules because they are having non-polar bond. It's true. Good. Fine. Now come toward these sort of molecules, those are having polar bonds. Then if the molecule is having non-polar bond, obviously it will be overall a non-polar molecule. Yes, it is true. उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है. But if the molecule is having polar bonds, then it is not necessary that the overall molecule is also a polar molecule. That is an amazing factor. In spite of having polar bonds, a molecule not be necessarily a polar molecule. अजीब बात है ये. Molecule is hosting having polar bonds, but overall molecule is not polar. कैसे? उसके लिए again, as I told you, we find the dipole moment. This dipole moment, dipole mean dipole, किसी भी molecule के या bond के ऊपर जो pole बनते हैं. Same is the case, क्या उस पूरे molecule के अंदर भी कोई dipole है, overall कोई dipole बन रहा है या नहीं बन रहा. Movement mean या movement कह लें in simplest word, यानी उस dipole जो है क्या alive हैं, क्या वो एक दूसरे को cancel तो नहीं कर रहे हैं. I mean, whether the molecule is having a net dipole on it. इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है इस नाम की डायपोल मोमेंट की, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो यूं है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मॉलिक्यूल को रखते हैं, लेट्स सपोज दिस मॉलिक्यूल इज HCl, आप इसको प्लेस करते हैं. व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, दिस इज द नेगेटिव प्लेट एंड दिस इज द पॉजिटिव प्लेट. व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, this molecule will show rotation, movement. Positive end negative वाली प्लेट वाली साइड पे चला जाएगा, and this negative end will be attracted to the positive plate, to the positive end of the plate. This movement is called dipole moment. हम अगर इसको on the plane of paper चेक करना चाहते हैं तो हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपने वो याद करने हैं. अगर आपके पास डायपोल मोमेंट का आंसर 0 आ रहा है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल, whenever you are supposed to check the overall polarity of the molecule, then you will check its dipole moment. Dipole moment is the overall polarity of whole molecule, not the polarity of single bond. तो dipole moment क्या है? Basically, simply speaking, sum of bond polarities in a molecule. Sum of bond polarities in a molecule. तमाम मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड हैं उनकी पोलैरिटी को सम कर दें. अगर उन सम का आंसर इफ इट इज इक्वल टू 0, आई मीन दे आर कैंसलिंग आउट देयर पोलैरिटीज, molecule will be non-polar in spite of having polar bonds. But
if they are not cancelling exactly each other, if they are not cancelling the polarities of each other, then it means that its dipole moment is not equal to zero, and at that time the molecule is announced as a polar molecule. ये है कहानी जो कि डायपोल मोमेंट जिसको हम कहते हैं. डायपोल मोमेंट का जो बेसिक थीम है, दैट इज एप्लीकेबल ऑन whole covalent molecule, not bond, not single bond. So, what is dipole moment? As far as the simplest variant of the dipole moment is concerned, sum of the bond polarities in a molecule is said to be the gesture of, answer of dipole moment. And so, for example, मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. नंबर 1, आपने इस तरह का मॉलिक्यूल ड्रा करना है, दैट इज कॉल्ड लीवेज स्ट्रक्चर. लीवेज स्ट्रक्चर ड्रा करना है आपने. अभी कुछ चीजें मैंने पढ़ानी है आपको, वो अभी आपने नहीं पढ़ी हैं. हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर. कि प्रॉपर स्ट्रक्चर का आपको नहीं पता, जैसे मैंने ड्रा किया फिलहाल ऐसे ड्रा करेंगे. सेकेंड थिंग इज, you will mark the partial positive and partial negative charges according to their electronegativity. इस डायग्राम पे देखें, मैंने कुछ एक शॉर्टकट बताया था आपको. If carbon is bonded with oxygen, then carbon is having partial positive charge on it and oxygen is having partial negative. Because its electronegativity is more. Correct, than carbon. This is the sign of partial, mean half or less than half, not full, it may be more than half. Partial mean not complete. Partial positive, that is not complete positive. It may be half, it may be more than half, it may be less than half, and so on. Partial negative and partial positive charges. So, दूसरा काम आपने charges mark कर दिए. Partial positive and partial negative charges. The third process is mark vectors from partial positive to partial negative. So I am marking vector over here. The last one step is find the sum of vectors. You know, these two vectors are anti-parallel vectors. Got it? Opposite direction? Yes. So the sum of anti-parallel vector is equal to zero. Yes. True. If the answer is zero, then this overall molecule is said to be non-polar. Good boy, non-polar. So this molecule, in spite of having polar bond, is a non-polar molecule because of net cancellation of the polarities of the bond to each other. They are cancelling polarities of each other. एक उधर की polarity एक का उधर है, एक की उधर है. They are in opposite direction. So they are cancelling out. Overall molecule is having no impact or effect of the polarity. Got it? Ji sir. Come towards another example and come towards another question, another example, not question, basically. It's a boron trifluoride. And its structure is like that. Trigonal structure, bond angle is 120 degree. First of all, number 1, I have drawn lever structure. Number 2, draw the partial positive and partial negative charges on it. Partial positive. Chlorine is partial negative. Boron is partially positive, sir. Good. Now, draw the vectors. यार इसका वेक्टर सारे ही या क्या कहेंगे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में. Yes, in this case these three vectors are in fact cancelling each other.
पोलैरिटीज को कैंसिल कर रहे हैं ये कम से कम, मैग्नीट्यूड को इग्नोर करें फिलहाल. दे आर बेसिकली कैंसलिंग देयर पोलैरिटीज. सो अगेन द सम इज इक्वल टू 0. अब ये कैसे कैंसिल कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू resolve these two vectors. Let's suppose vector 1 vector 2 and this is the vector 3. Vector 1 and 2 को अगर मैं resolve करता हूँ, that is said to be the resolution of vector. Vector 1 के सामने बिल्कुल vector 1 ड्रा करें, vector 2 के सामने exactly vector 2 ड्रा करें. फिर देखें as you are starting from the boron to एक और vector ड्रा करें where heads are meeting. So basically this is said to be vector 3. I mean that is said to be resultant vector. तो अब हमारे पास एक वेक्टर ये आ गया, that is the overall answer of vector 1 and vector 2, and the remaining vector is this one. जी आप क्या ड्रा कर रहे हो हसन? डॉट्स लगा रहा हूँ सर. अच्छा गुड. तो ये इन दो वेक्टर्स का अब फिर हम सम लेंगे. These two vectors are basically anti-parallel vectors. So It will be 0. And it will be 0. Molecule is? So it will be non-polar due to polarity cancelling each other out. Correct, good boy. तो ये है बेसिक मैकेनिज्म, ये है बेसिक रूल. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ खिजर रूल. तो आपने अगर जनरली चेक कर रहा हो फॉर नंबर 1 सिंगल सेंटर मॉलिक्यूल्स, यानी जैसे मैंने अभी लिखा है इस मॉलिक्यूल का एक ही सेंटर है कार्बन, इस मॉलिक्यूल का एक ही सेंटर है बोरॉन. मोस्टली मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका एक सेंट्रल एटम होता है. तो उसके लिए आपने ये रूल लगाना है. नंबर 1 चेक द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ये आपने चेक करना है. इफ यस molecule is polar. Point number 2, if you are not having any lone pair, then you will take the step 2. It is step 1 to step 2. Check the atoms around the central atom. Atoms around central atom. If they are same, they all are same, molecule is non-polar, and vice versa. ये एक शॉर्टकट रूल है. कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके 2 स्टेप लगाने हैं आपने. सिंपल ड्रा करना स्ट्रक्चर, जैसे मर्जी ड्रा कर दें, ड्राइंग का इशू नहीं होगा इसमें आपको. लेकिन आपने चेक करना है क्या उसके आखिरी छल में कोई लोन पेयर तो नहीं है, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर तो नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है. पोलर मॉलिक्यूल. नंबर 2 आपने एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम चेक करने हैं. अगर ऐसा है सर जी, सिंगल सेंटर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जैसे ये BF3 था. हाँ. अब अगर मैं लिखूं ना कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन एंड H, दिस इज नॉट अ सिंगल सेंटर मॉलिक्यूल. सेंटर में 2 एटम आ रहे हैं इसके. अच्छा. दिस इज सिंगल सेंटर मॉलिक्यूल. CO2 में एक सेंटर है, सिंपल कार्बन है, एक कार्बन है. NH3 सिंगल सेंटर मॉलिक्यूल. NH3 सेंट्रल एटम्स कितने हैं इसके? सर सेंट्रल एक है. एक है. गुड, यही रूल लगाएंगे. लोन पेयर है. These dots, pair of electron that is not taking part in bond formation is called lone pair. Any pair of electron that is not taking part in bonding is called lone pair. आखिरी शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, they are not taking part in bonding, it is said to be the lone pair. Got it? Okay sir. Okay. नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. 5. Sorry, no, 5. 5.
This nitrogen is using 3 electrons, so rest of 2 electrons are over here. 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं नाइट्रोजन के ऊपर. So they are residing in the last shell of nitrogen in form of lone pair. So this molecule is having lone pair. तो ये चीज आपको बता रही है कि this molecule is polar. ये रूल सिर्फ AS के बच्चों के लिए ठीक है. इसमें एक्सेप्शन है इस खेजर रूल में. These are not valid everywhere. लेकिन AS में जितनी भी एग्जाम्पल हैं सब पे इक्वली फिट हैं. आपको इतने मार्क्स दिलवा जाएंगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी. यस. कम टूवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल. जैसी मर्जी शक्ल ड्रा करें. ऑक्सीजन हैज यूज्ड 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, इट हैज यूज्ड 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, एंड ऑक्सीजन इज हैविंग, कोई लोन पेयर है इस पर इसके पास? रियल ऑक्सीजन यस 7 होते हैं, सो 5 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना. अब बताएंगे ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर अकॉर्डिंग टू माय दीस स्टेप्स. लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे तो पोलर है. करेक्ट, इट्स अ पोलर. एक शॉर्टकट है पोलर नॉन पोलर चेक करने का. नाउ कम टुवर्ड्स अनदर एटम, दैट इज मीथेन. सर इसका क्या मतलब है? एटम अराउंड सेंट्रल एटम, इफ दे आर द सेम दे आर नॉन पोलर. यस. अगर लोन पेयर नहीं है फिर आप ये चीज चेक करेंगे. स्टेप 1 के बाद एग्जांपल दे सकते हो इसका? एटम अराउंड सेंट्रल एटम का सेंटर एग्जांपल एक देख सकते हो? ले सकते हो? हाँ जी प्लीज. आप पहले जरा इसको देखें. ये सिंगल सेंटर मॉलिक्यूल है जी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? CH4. नेम? मीथेन. करेक्ट. इज देयर एनी लोन पेयर ऑन दिस कार्बन एटम? कार्बन पे 4 नो लोन पेयर सर. नो लोन पेयर. तो पहला स्टेप तो नहीं लगने वाला. अब क्या करेंगे? कम टुवर्ड स्टेप नंबर 2. इस सेंट्रल एटम के बाहर कौन से एटम है? हाइड्रोजन. अच्छा, अगर सारे सेम है तो इट इज नॉन पोलर. एग्जैक्टली. अच्छा, तो सारे कार्बन होंगे? नहीं, सारे सेम. alike, you can say alike atoms. Same atom are centered around atoms or group of atom. कुछ और भी हो सकते हैं. group of atoms around central atom, if they are same, they are like, then the molecule is non-polar. Now if I'm having this molecule, this is said to be chloromethane. What about it? No sir, Cl is not the same as hydrogen, so it will be एक लोन पेयर है. पहले ये चेक करते नहीं है लोन पेयर. सेंट्रल एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम आर नॉट द सेम सर, तो क्या होगा इसमें? बताए ना. अगर सेम होते तो क्या होता? तो ये नॉन पोलर होता. अब सेम नहीं है तो क्या होगा? पोलर होगा. एग्जैक्टली. पोलर. सिंपल. गॉट इट? जी सर. तो ये है बेसिकली पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. दिस इज द मेथड. अब इस पर आ जाएं. इसमें 2 सेंट्रल एटम है तो इस पे हम ये रूल खिजर रूल नहीं लगाते हैं. हम इस पे वही पहले वाला वेक्टर रूल लगाते हैं. तो पहले ज़रा मैं इसको ऊपर लेके जाऊं या जैसे आपने कहा स्क्रॉल डाउन करूं. वाह. नाउ आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर again carbon, double bond carbon, Cl, H, and hydrogen and Cl.
तो सबसे पहली बात यह है कि प्लीज हेल्प मी आउट टू मार्क पोलैरिटी ऑन ईच एटम. हेल्प मी आउट. Okay, sir. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है. पहली तो So बात है, रूल नंबर 1 मैंने कल आपको बोला था, आपने रिवाइज नहीं किया. मैंने बोला था कि आपने कार्बन और हाइड्रोजन को इग्नोर मारना है. ये देखो, CH in fact it's polar but approximately non-polar. अब मैं अपनी आसानी के लिए फॉर माई ओन कन्वीनियंस आई एम रिमूविंग दीज नॉन पोलर बॉन्ड. चटाक. नो मार्क पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. ये मैंने बताया था कल आपको कि कार्बन ग्रुप 7 के साथ हो, ग्रुप 6 के साथ हो, ग्रुप 5 के साथ हो तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड अदर एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. So partial positive and partial negative. So I'm marking arrow over here, vector over here, positive, negative. So what is the sum of these vectors almost? They are anti-parallel vectors. Exactly एक दूसरे के उलट हैं. जी सर, they're anti-parallel. So its sum will be equal to 0. So this molecule, उसके बॉन्ड मैंने हटाया तो दोबारा लिख रहा हूं, is non-polar. As a non-polar. Come towards another molecule, Cl, H, Cl. What about this? ऊपर की तरफ है, ये opposite direction में ऊपर की तरफ है, so it will ultimately result in a resultant vector which is straight but upwards, right? Good. I mean, it's not equal to 0. Yes, it's not equal to 0, so it's a polar Good boy. It's a polar molecule. bond. Shabash. Polar bond or polar molecule? Polar molecule. Okay. Overall Polar molecule. bond is something else. Bond तो दो हैं, हाँ, वो दो हैं already. Polar bond is something else. Overall molecule is going to behave as a polar molecule. तो इनकी पोलर नॉन पोलर नेचर की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एंड सो ऑन. अब ये सेम मॉलिक्यूल है, इनका केमिकल नेम सेम है, इट्स अ नॉन पोलर. ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो इन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन, दे विल बी डिफरेंट. तो दैट इज अ बेसिक रूल. कुछ फार्मूलाज, कुछ आई मीन आप जब शेप्स पढ़ लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा आपको शेप्स, तो फिर आपको समझ आएंगी. आप प्रॉपर शेप ड्रा करेंगे, फिर कैंसिलेशन करेंगे एंड सो ऑन. लेकिन जनरल रूल जो मैंने आपको बता दिया, खिज़र रूल, ये आपके बहुत काम आने वाला है. अगर आपके पास कोई एक सेंट्रल एटम है और वहाँ पे आप लोन पेयर चेक कर सकते हैं, यू कैन अनाउंस द पोलर और नॉन पोलर. For example, I am going to mark this molecule and you know, I mean, what is its name? लेकिन आप बता सकते हैं ये molecule polar है या नहीं. Apply the same mechanism, same things and so on. Is it polar or non-polar? You will let me know. Lone pair. There is no lone pair. There is no. Okay, so sir, it's polar. Good boy. It's polar. So only this bond is a polar bond, right? And if we mark the vector from positive to negative, it is only one vector. No other vector is over here to cancel it out. M is not 0. And its answer is sum is not 0. Again, it's polar. अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक ये मॉलिक्यूल है, and this one, ये तो खैर मैं पहले आपको बता गया हूँ. चले मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको.
इसको मैं F लिख रहा हूं यहां पर, इसको भी F लिख रहा हूं यहां पर। सो सबसे दूसरा पहले वाला इज आपने पोलर, दोनों पोलर हैं सर। गुड बॉय, दोनों पोलर है, शाबाश। इट्स अ पोलर एंड इट्स अगेन पोलर। विच वन इज मोर पोलर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन सर। गुड बॉय। इसमें ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है जिसके अंदर, तो जिसके अंदर ज्यादा पोलर बॉन्ड्स खड़े होंगे, पोलर बॉन्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो गुड, इट्स मोर पोलर। नंबर वन पोलर, then which one is the more polar, which one is the less polar, and so on. Good boy, अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया पूरा। That is all about dipole moment, the basic mechanism, a tool to check the overall polarity of a covalent molecule. Simple covalent molecule polar हैं या नहीं हैं, it will let you know. Dipole moment will let you know, will announce the final result of its polarity. In spite of having polar bonds, some molecules are yet not non-polar because their polar bonds are cancelling the polarities of each other. So overall molecule is not behaving as a polar molecule. तो ये एक टॉपिक क्लियर हो गया हमारा, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी। पहले हमने पढ़ा बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है। बॉन्ड पोलैरिटी इज अ चार्ज सेपरेशन ऑन अ बॉन्ड because of electronegativity difference of the atom, those are making the bond. If the atoms those are making the bond are same, HHClCl is CIIOO, so they are non-polar bonds. So polar bond, non-polar bond, पहला step ये है। अगर कहीं पर भी non-polar bond है तो definitely that molecule is non-polar, वो तो polar हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पर polar bond है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो भी polar हो, वो polar भी हो, I mean, then you will have to check the overall polarity with the help of dipole moment. Then there are the two methods, one is the Khizr's rule and other one is the vector rule. तो दोनों वेक्टर, आप दोनों मेथड लगाएंगे। अगर दो सेंट्रल एटम हैं तो आपको वेक्टर रूल लगाना है। वैसे तो आप वेक्टर रूल कहीं पर भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया तरीका, दैट इज रिपोर्टेड इन योर बुक्स। एंड अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं और आप शॉर्टकट चाहते हैं, unfortunately your molecule is having central atom and that atom is having lone pair, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair. If it is having hosting lone pair, definitely it will be a polar molecule. तो MCQs में लिखना नहीं होता है, MCQs में आंसर रिपोर्ट नहीं करना होता, सिंपल पिक एंड चूज होता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर रिपोर्ट करना पड़ जाए, कहीं पर P2 का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं and he is asking why this molecule is non-polar, then you will write this: the sum of the bond polarities is equal to 0. I mean the polar bond in this molecule are cancelling out their polarities and obviously this molecule is non-polar. अगर कोई molecule polar है तो आप लिखेंगे कि इनकी जो bond polarities हैं they are not exactly cancelling each other, the polarities of the bond. So basically this molecule is overall a polar. ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर एक पोल बन जाता है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक डायपोल बनता है, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। जैसे बॉन्ड के ऊपर पोल होता है, ऐसे ही उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक पोल बनता है, वो पोल नेट पोलैरिटी को शो कर रहा होता है। अगर सारे बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, देन द ओवरऑल मॉलिक्यूल इज हैविंग नो पोल, उसके ऊपर कोई पोल नहीं बनता। हाँ, उसके बॉन्ड फिर भी पोलर रहेंगे, बॉन्ड पोलर होंगे, फिर भी होंगे, बट द ओवरऑल polarity for the molecule will be equal to 0. So that was dipole movement.